11 में निम्न उद्धृत है. On the basis of what has been observed herein above, this court directs the Director General of Police of Madhya Pradesh to register forthwith an FIR against so and so for offences under section 152, 196 1B and 197 1C of the BNS. The same must be done by today evening, failing which tomorrow, when the matter is listed, the court may contemplate proceedings against the Director General of Police of the state for contempt of this order. The AG office is directed that this order shall be transmitted forthwith to the Office of Director General of Police of a state and ensure that it is done. List this case on the top of list tomorrow, 15/5/2025, within bracket. The Registrar IT of the court is requested to collect all the link. I'm sorry, this is to the video of that disparaging speech made by so and so, in addition to the link mentioned in para 1 supra. Now bracket. दिनांक 14/5/2025 का पूर्ण आदेश संलग्न है. अतः उक्त आदेश के, अब ये इंपॉर्टेंट, अतः उक्त आदेश के अनुपालन में सो एंड सो के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196 1 का तथा 197 1 का के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है. पूरा ऑर्डर है सर, उसमें जी पूरा ऑर्डर है सर. प्लेस ऑफ डेट ऑफ इंसिडेंट है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट है सर, और जो डायरेक्शंस है इसमें सर एफआईआर को जस्टिफाई करने के लिए देयर इज अ डायरेक्शन, देयरफॉर दिस एफआईआर इज रजिस्टर्ड एंड नाउ मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन. सारा न्यूज़पेपर क्लिपिंग दैट इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन सर. और उसमें सर अब आगे बहुत सारी चीजें होना बाकी है सर. सारी चीज नहीं है इसमें. In an investigation, this is not a case of murder or a crime murder or circumstantial evidence. There is one speech, the evidence is there of that speech. There are very few, a little bit, there are hardly investigations that is being done. And then of course it is for the police to decide where is it the final report, whether it will be a charge sheet or whether it will be. But show me here where is the allegation against the man as to what he did for which the FIR is. And except for saying that the order of the High Court dated 14/5/2025 is ends here. Where is it in paragraph? Yes, the direction given by the court to PG. कोर्ट ने उस व्यक्ति के लिए ऑब्जर्व किया, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है. सिर्फ डायरेक्शंस जो दी जा रही है उस व्यक्ति के एक्ट के बारे में कोर्ट ने एलैबोरेट और पास किया, वो कहीं से